Hello everyone and very good evening. I hope you all are doing fine and well. So today in the class, we will be reading electrostat. We have already started with this topic, right? So today in the class, again, I will be just taking you through what Coulomb's law. Then we will do some questions and we will keep on moving ahead. Very good evening. Okay. Okay. चलो ठीक है. So let's start with the session. आज के क्लास में what we will be reading, we will be starting with Coulomb's law that we have already read a bit. Permittivity I have already explained. Then we will learn principle of superposition. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. ठीक है. सो कल के क्लास में ही मैंने बताया था कि कूलम्स लॉ क्या होता है. सो व्हाट इज दिस कूलम्स लॉ? It states that if there are charges, so if there is one charge and another charge, if they are kept at certain separation r, then force acting between these two, the magnitude of force is directly proportional to the magnitude of their charges and inversely proportional to distance का square. This will be the thing. Okay, so force का value ये होगा. What is this k? This k was 1 upon 4 pi epsilon. In the case of vacuum, it was 4 pi epsilon naught, and its value is equal to 10 to the power 10, 9 into 10 to the power 9 with proper units. Okay. We will again go back to epsilon. So if you talk about now the direction of force, if two charges are of same nature, then force will be repulsive in nature. And here, if we assume that ki Q1 positive hai and Q2 is also positive, then force acting on Q2 because of Q1 will be directed in which direction? Q2 पे force निकालना है because of Q1. So Q1 will repel Q2 from itself. और अगर Q1 Q2 को repel कर रहा है, it will push it away from itself. That is, force will act away from the Q1. So force का direction will look something like this. So this is the direction of F Q2 Q1, right? Similarly, if you calculate force acting on Q1 because of Q2, this its direction will be this. So it will depend on if charges are of the same nature or of opposite nature. Let's say here this is minus Q2. Then force acting on minus Q2 because of Q1 will be in this direction because Q1 will attract Q2 towards itself. So such sort of thing will happen. Then a Coulomb's law, since it is telling us about force acting between charges, and we already know force is what? Force is a vector quantity. हमें पता है ना force क्या होता है? Vector quantity होता है. So let's write this Coulomb's law in vectorial form. जैसे यहाँ पे मैंने direction को arrow से दिखा. तो direction को we can show by unit vector. है ना? This thing you must have studied in your class 11. So let's say I have drawn here one coordinate system. ये है तुम्हारा origin. This is origin. ठीक है? One charge is kept at this position vector r1, and another charge is placed at position vector r2. Let's say q1 and q2 are of same nature. ठीक है? Then force acting on q1 because of q2. Force acting on 1 because of 2. F1 2 मैं लिख रही हूँ. So 1 पे force 2 की वजह से क्या लगेगा? If we first write the magnitude, then this will be k q1 q2 divided by this distance. Okay, which distance we are going to see or write? Distance between q1 and q2. So this is this one, right? Then let's say this distance is r. So r ka square. If it comes about the direction, then force acting on 1 because of 2 will be what? 2 will repel 1. Then it will repel 1. It means it will push it away from itself. It means direction of force will be directed in this direction. Now, how to write this direction? You all must have studied displacement vector. जैसे अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि there is one particle initially, let's say इसको मैंने R1 लिखा, इसको R2 लिखा. So let's say initially our particle is at R2 position, ठीक है? And finally our particle is somewhere here at R2, sorry, at R1 position vector. So initially particle was here,
at R2 position vector. Finally, particle is at R1 position vector. So displacement of this particle is in this direction, and this can be written as displacement को हम कैसे लिखते हैं? Final vector minus initial vector. So here final position vector is R1, initial position vector is R2. So R1 vector minus R2 vector is directed in this sense, right? And here also force is directed in this sense. यानी कि force is in the direction of R vector. ठीक है? So direction can be written in terms of unit vector. Unit vector in which direction? In the direction of R vector. How we indicate unit vector? With a cap. How we indicate general vector? With an arrow. Okay. So if we have to indicate R vector, we will write like this. If I'm writing, sorry, if I'm writing like this, it means I'm indicating what position vector. ठीक है. So this is this. अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सपोज कर लो Q1 जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, लेट्स से इट्स नेगेटिव. In that case, force acting on 1 because of 2, magnitude will remain same, है ना, k q1 q2 by r का square. Magnitude क्या रहने वाला है? Same. Direction क्या हो जाएगा? Since now q1 will get attracted towards q2, its direction will be opposite to the r vector. Sorry. So if you're going opposite to the r vector, then here you will write r cap with negative sign. Done it? And here r vector is equal to what? It is equal to r1 vector minus r2 vector. ठीक है, क्योंकि r2 हमने इस पोजीशन को लिया है, r1 हमने इस पोजीशन को लिया है. Anyone is having any problem with this particular format? जिस तरह से अभी मैंने कूलम्स लॉ को लिखा है, anyone is finding it difficult? Let me know if yes. Uday, Clarkson, something. Yes. And I will try to pronounce everybody's name correctly because I know how much it matters for you to, for you to hear your right name. It's important. I know. Chinvi, Haveri, Lily, Larthi, Jinvi, Haveri, yes. किसी को कोई प्रॉब्लम है so far? दिनेश, अमूल्य, हेमंत, हिमा, देखो जो जो नाम दिख रहा है मैं पूछ रही हूँ. How this vector will change? I couldn't get your question. How this vector will change meaning? With sign. I told you. जैसे देखो, अगर इस direction of vector को r मान रहे हो, तो minus r will be opposite direction, right? So if this direction is r cap or r vector, then this direction will be minus r vector. So if you're giving minus sign, means vector direction is getting reversed. ठीक है? Yes, Coulomb's law में क्या क्या बताऊं? बताओ. Lecture you will get Sai on अवंती लाइव 1 चैनल है. देखो, अवंती लाइव 1 करके एक चैनल है, ठीक है. एंड यहाँ पे जब तुम जाओगे, देर विल बी वन फोल्डर एंड दैट इज क्लास 12 2025-26 सेशन करके, ठीक है. देर यू विल गेट, ठीक है. और अदरवाइज इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, स्टे इन द क्लास फॉर सम मोमेंट इन द लास्ट. आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन चैट सेक्शन, ठीक है. जस्ट रिमाइंड मी बिफोर दैट. Yes, so you want me to explain what you asked something of Coulomb's law. What do you want to ask? Yes, Kalarsan. If you want me to explain it again, what I'm trying to say is I'm trying to write Coulomb's law in vector form. So let's say there is Q1 charge here, Q2 charge here. Q1 charge is at what position vector? Position vector is a term in vector. You must have studied this thing in your class 11. ठीक है.
सो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई भी एक पार्टिकल है यहाँ, इसके पोजीशन वेक्टर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? वी सिंपली ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन अप टू दिस पॉइंट, सो इन वॉट एवर डायरेक्शन इट इज पॉइंटिंग आउट, दिस इज द पोजिशन वेक्टर। ठीक है, इसी को हम क्या बुलाते हैं? Yes, we should do some question. We will do. So this is a position vector. Initially or always, because charge Q1 is placed at that point, Q2 is placed at that particular point. Q1 and Q2 are not moving. So their position is fixed. So position vector of Q1 is, let's say R1. Position vector of Q2 is, let's say R2. Okay. So this is the position. Now we have to calculate force. Force का magnitude आप कैसे लिखोगे? K Q1 Q2 by distance का square. So distance between Q1 and Q2 is how much? It is this much. Let's say this is R. So R का square. If you talk about the direction, then direction को हम कैसे लिखते हैं? Direction can be written like here, if Q1 and Q2 both are of same sign, then force, let's say this is force acting on 2 because of 1. So if they are of similar nature, one will repel Q2, it means one will apply force on Q2 in this direction, and this is the direction of R vector. Then and R vector can be written as what? Because this is position, R2 is position vector of 2, R1 इज पोजिशन वेक्टर ऑफ 1। अगर तुम्हें यहाँ पे R वेक्टर निकालना है, R वेक्टर कैन बी रिटन एज R2 माइनस R1। इसको समझाने के लिए मैंने एक बात बोली, मैंने ये बोला कि लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। इनिशियली द पार्टिकल इज एट R1 position vector, and finally at certain time it is at R2 position vector. Then what is the displacement? Displacement you will write as R2 minus R1 vectorial term में, and that displacement by will get indicated by this distance. So this is what I am writing it as R. So this R can be written as what? R2 minus R. ठीक है? And direction of force acting on 2 because of 1 here is along R21 direction. So it is written like this. So this is how we write force in vector form. ठीक है? Now let's do this question. Take your time, do it and let me know. I'm going to give you 1.5 minutes. Okay? So do this question and let me know what things you are getting. Notes you will get in your Enable portal itself. From the on the portal from which you are joining the classes. Okay? There only you will get the notes. Just check it. चलो मैंने सबके लिए पोल लॉन्च किया है. यू कैन आंसर योर ऑप्शन इन द पोल. ठीक है? ठीक है. Everybody, please solve. Don't put in answer from somewhere. Please, it's my request. ठीक है? Okay, notes कब मिलेगा? You will get after the class. You can check after the class. ठीक है? चलो, how many of you got the answer? I got 12, 13 answers so far. ठीक है? Still you are having 20 seconds. Everyone done with the solution? आ गया सबका? Sanju, Sri, you need to recheck your calculation. Maybe you are doing mistake there. So check it once. Chalo, theek hai. Now I will end the poll. Let's see. So what is the question? There are 2 point charges A and B.
So one is A, another is B. A is having plus Q charge and B is having minus Q charge. And they are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. So always remember Coulomb's law is only applicable for point charges, charges which have no dimension basically. So here there are 2 point charges. One is plus Q, minus Q. Let's say they are at certain separation R, done it? And it is said that force acting between them is F. So F is equal to what? F is equal to KQQ by R ka square. Negative sign I'm not writing because that will decide the direction. So magnitude wise, it will be KQ square by R square here. Now, what is happening? If 25% of A is getting transferred to B, 25% of A is getting transferred to B. So A is losing 25% of its charge. So what will be the new charge on A? 25% का मतलब कितना हो गया? 25% into, sorry, 25% of Q. So what will be its value? If you calculate, it will be Q by 4. So Q by 4 amount of charge it is losing. How much charge will be left with it? Q minus Q by 4. कितना charge इसके पास बचेगा? Q minus Q by 4. क्योंकि 25% means 1/4 charge it is losing. So 3Q by 4 charge is left here. Now let's talk about B. What is happening to this Q by 4 charge? It is getting transferred to B. B was having originally charge how much? Minus Q. And how much charge it is gaining from A? Plus Q by 4. So what will be its value? Its value will be minus 3Q by 4. So now this has a charge of minus 3Q by 4. Now what will be the new force? न्यू फोर्स को हम लिख सकते हैं k into 3q by 4 का स्क्वायर divided by distance का square, because distance we are not changing, right? So this will be equal to kq square by r square into 9 by 16. So force, this was equal to how much? F. So new force is 9 by 16 of F. Done it? So correct option will be C. I hope it is clear. If anyone has any doubt, you can let me know in some seconds. किसी को doubt है, you can raise your hand. If you feel like writing takes a lot of time, then ठीक है? Is it clear? Chandrika, Dharni, Rogpat, Amya, others. चलो, सबको clear है? हिमा, okay. Once more you are saying. So what is happening over here? यहाँ पे simple ये हुआ. Okay, yes, JNB Haveri sign will be negative in first, in second case. चलो ठीक है. क्वेश्चन क्या था? हमारे पास दो चार्जेस थे, प्लस क्यू माइनस क्यू. दोनों इनिशियली दे आर केप्ट एट सेपरेशन आर. Force acting is given as F. So F is equal to initially what? KQ square by R square according to Coulomb's law, right? Now what is happening? Q is losing 25% of charge. So 25% of Q कितना होगा? This will be equal to 25 by 100 into Q. So this is equal to Q by 4. So Q is losing, that is A is losing Q by 4 of its charge. And it is losing this charge to B. यानी कि B is receiving this lost charge. Done है? तो मैंने ये बोला कि A के पास what will be the value of new charge left? So value of new charge left will be, it has lost Q by 4. Q minus Q by 4 करोगे, you will be getting plus 3Q by 4, right? Done it? So this is going to happen. What will be the charge remaining with B? B was having originally charge minus Q, and from A it is receiving. So it is having some more extra charge. How much? Q by 4. So what will be its value? Its value minus 4Q plus Q. So minus 3Q divided by 4. So one is having plus 3Q by 4, another is having minus 3Q by 4. So new force will be Coulomb's law का constant K into
Q1, Q2. Q1 is how much? Q1 is your 3Q by 4. And this is your, again, 3. Minus is there, but that sign I'm not including here because we are calculating magnitude. This sign will decide कि B is getting attracted towards A, right? So simply I'm writing it like this. So this divided by R ka square. So what will be the value? Value you can write like KQ square by R square into 3 into 3, 9, 6, 4 into 4, 16. So this will become 9 by 16 into, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 by 16 into KQ square by R square. So 9 by 16 times initial force. And that is why option is B. ठीक है? Is it clear now? Everyone clear with this? Thank you. Please be attentive in classes and please also properly follow the class. ठीक है? सही से क्लास घर पे भी थोड़ा रिवीजन करके आओ, थोड़ा होमवर्क करो, so that things will be more good, है ना? So that we can go a bit more fast. That is why. But yes, initially you should be asking more because initially if you are not able to ask and get your doubt cleared, then gradually you will start losing interest in the classroom. So it's important कि तुम अपने doubts को clear करो. Permittivity क्या होता है? I have discussed already permittivity. So somebody asked for the definition. Simply, it is a measure of electric polarizability. I mean, it will talk about how clearly one charge is able to see another charge. Permittivity was indicated by letter epsilon, and for vacuum, it is indicated by letter epsilon naught. Okay? So this thing we have already discussed. Now there is a question, find the dimension of permittivity. So this thing we will do. You have already studied in the very first chapter of class 11 how to find the dimension of things. So here you have to find the dimension of permittivity. Calculate it and let me know if you're done. Okay, do it. Which equation you will use to calculate permittivity? Force वाला कूलम एक ही इक्वेशन अभी तक हमने पढ़ा है 4 pi epsilon Q1 Q2 by R का square. So calculate the dimension of permittivity. So for that you should know the dimension of force, you should know dimension of charge, you should know dimension of distance. Do it. Do it. Anyone who got the answer? फोर्स का डायमेंशन क्या लिखोगे? नो, JNV Haveri. I'm not talking about unit. I'm talking about dimension. ठीक है? I'm talking about dimension. यूनिट की बात नहीं कर रही मैं, डायमेंशन की बात कर रही हूँ. नहीं. ओके. M1. ओके. ओके. यस, सॉर्ट ऑफ. चलो ठीक है, बहुत लोगों ने ट्राई किया लिखने का. मे बी इट्स डिफिकल्ट टू राइट हियर इन द चैट सेक्शन, है ना? फोर्स का डायमेंशन. यस. ओके. सो फोर्स का डायमेंशन हम क्या लिखते हैं? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. और मास का डायमेंशन क्या है? एम. एक्सेलरेशन का क्या होगा? डिस्टेंस, डीवी बाई डी टी, राइट? सो वेलोसिटी का क्या लिखते हैं? एल टी माइनस वन. आई मीन एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी. सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या लिखोगे? वेलोसिटी का डायमेंशन बाई टाइम. वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम. सो दैट इज एल टी माइनस वन बाई टी. सो दैट इज एल टी माइनस टू. सो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू. अब देखो एप्सिलन का डायमेंशन किसके बराबर होगा? पहले तो ये लिख लो. एप्सिलन का डायमेंशन होगा डायमेंशन ऑफ चार्ज, अगेन डायमेंशन ऑफ चार्ज, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ फोर्स, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर.
सो चार्ज का डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं? एम्पियर इज बेसिकली द दैट इज फंडामेंटल यूनिट. सो करंट को हम क्या लिखते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. आई का डायमेंशन एम्पियर होता है, टाइम का डायमेंशन टी हुआ. सो क्यू का डायमेंशन क्या हो गया? ए टी. सो हियर इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर टी का वो, सॉरी, क्यू का डायमेंशन हम लिख रहे हैं. सो दैट इज ए स्क्वायर टी का स्क्वायर इट विल बी, राइट. सो फोर्स को आप क्या लिखोगे? फोर्स यू विल बी राइटिंग एज, फोर्स क्या होगा? एम एल टी माइनस टू एंड दिस डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर. सो नाउ इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, व्हाट विल बी द आंसर? एम का पावर माइनस वन, एल का पावर क्या हो जाएगा? एल का पावर माइनस थ्री, एंड ए का होगा स्क्वायर, और टी का क्या हो जाएगा? माइनस फोर. ठीक है. तो टी का माइनस फोर या प्लस फोर? प्लस फोर. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस एज द आंसर? टी का फोर, ए का स्क्वायर. यस. यस श्रावणी. ओके हिमा, थैंक यू. यस रामा, हो गया सबका? ठीक है. सो दिस विल बी द थिंग, राइट. सो दिस इज हाउ वी राइट थिंग्स. ठीक है. करंट का याद रखना. करंट को हम लोग कैसे लिखते हैं? चार्ज के लिए डायमेंशन कैसे लिखते हैं वो हमेशा याद रखना. सो करंट को हम लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? करंट इंटू टाइम, दैट इज ए इंटू टी. यहाँ पे मैंने आंसर गलत लिखा है, दिस वुड बी प्लस. ठीक है. चलो. नाउ व्हाट इज दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज अ वेरी सिंपल थिंग, एंड दैट सिंपल थिंग टेल्स दैट सपोज टिल नाउ वी आर जस्ट डीलिंग विद टू चार्जेस. सपोज कर लो हमारे स्पेस में देर आर थ्री चार्जेस, Q2, Q1, Q2 and Q3. And now if I'm asking what is the force acting on Q1, so what will be the force acting on Q1? If there was only one charge, one another charge, that is Q2, and if this separation is R, then force को हम क्या लिखते थे? We used to write it like K Q1 Q2 by R square. ठीक है, ऐसे लिखते थे. बट नाउ देर आर टू चार्जेस, सो हाउ नाउ विल वी विल बी राइटिंग द फोर्स थिंग. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन वन चार्ज बिकॉज ऑफ अनदर चार्ज विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनी चार्ज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. ठीक है, उसको उससे कोई असर नहीं पड़ेगा. यस, चेन बी हावेरी में बी. ठीक है. सो उससे उसको असर नहीं पड़ेगा. कहने का मतलब क्या है कि इफ देर आर इवन इन्फिनिट नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन योर स्पेस, एंड इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट चार्जेस फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, देन यू कैन सिंपली अप्लाई कूलम्स लॉ. जैसे यहाँ पे सराउंडिंग में सपोज कर लो Q4 भी है, Q5 भी है, देर इज Q6 एंड देन Q7, Q8, there's so many charges, and there is Q1, Q2, and distance between them is R. Still, force acting on one because of two will be equal to how much? K Q1 Q2 by R ka square. So, force acting between two charges is not getting affected by any other charges present in the system. This is called superposition principle. इसको अगर मैं और दूसरे तरीके से रखूं तो कह सकते हो कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, और यहाँ पे Q3 चार्ज है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, so what you will calculate? Net force acting on Q1 will be force acting on 1 because of 2 plus force acting on 1 because of 3. So दोनों ही फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे. While we will calculate this, we will simply mark what is the distance between Q1 and Q2. While we are calculating this, we will simply see what is the distance between these two. ठीक है. Let's say this is R1 and this is R2. Done. So F1 value, that is force acting on charge 1, will be equal to what? F12 plus F13. And how you will mark the direction? Yes, I'm coming to that. How you will mark the direction? Direction को कैसे करोगे? So Q1 and Q2 are of same nature. So Q2 will repel Q1. It means F12 will act in this direction.
ठीक है, क्योंकि Q2 will try to push the charge Q1 away from itself. So F12 is in this sense. Again, force acting on 1 because of 3, this will be also repulsive force. It means 3 will push 1 away from itself. Yani ki again, F13 will act in this direction. So basically here we are having two forces acting on one, and both force calculation we are doing using Coulomb's law. And this angle, if this angle is theta, then we have two vectors F12, F13, and to calculate net force, we will simply add these two vectors. ठीक है, सो F12 का अगर आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिखोगे, K Q1 Q2 by R1 का स्क्वायर. F13 का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिखोगे, K Q1 Q3 divided by R2 का स्क्वायर. So force acting between individual one pair of charges is not getting affected by another charge present, and that is basically what superposition principle tells. ठीक है, सो फोर्स अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं. अब देखो इन दोनों फोर्सेस को हम कैसे जोड़ सकते हैं. वी नो हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स. हमारे पास ऐसे दो दो वेक्टर्स होते हैं. अगर ये वेक्टर है तुम्हारा F12 और ये वेक्टर है तुम्हारा F13, इफ एंगल बिटवीन दिस टू इज थीटा, then summation of these two forces will be equal to what, F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर मीन्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 cos theta. Cos, चलो cos को इधर लिखती हूँ, cos theta. So this is how we add two vectors if angle between them is theta. Then so lots of questions you will get where you will be required to add forces vectorially in case of system of charges. ठीक है, so इस तरह से हम ऐड करेंगे. Then अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सिमिलरली हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे यहाँ पे व्हाट इज दिस, सपोज कर लो यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है. So whatever force will act on Q2, sorry, this is Q1, right? So whatever force will act on Q1 because of Q2, a statement of superposition principle is that it tells force acting between two charges is unaffected by any other charge present in the surrounding. ठीक है, that is the statement of superposition principle. ठीक है, वही है, उसको तुम इसी लैंग्वेज में सिंपल लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 है, and if I say what is the force acting between Q1 and Q2, then that will remain unaffected by presence of charge Q3. तो जिस तरह से हमने पहले कूलम्स लॉ में किया था ना, we have already calculated it. What superposition principle का statement is force acting between two charges is independent of any or simply doesn't get affected by any other charges present in the space. Somebody is asking what is the statement of superposition principle. So I would say if there are so many charges present in a space, then force acting between any one pair of charges will be independent of or will not get affected by any other charges present in the surrounding. So this is superposition principle. It means कि तुम्हारे surrounding में n number of charges भी हैं, then also between two charges you can simply apply Coulomb's law and write the magnitude and direction of forces. ठीक है, so this is the statement. ठीक है, चलो. Now here I'm trying to just show you it vectorially, so we don't need to go more deeper. I will just say कि force acting between Q1 and Q2, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि force acting on 1 because of 2, on 1 because of 2 will be in which direction? Will be in this direction. So this direction is not getting affected by the presence of Q3, and also force value, that is K Q1 Q2 by R square, is the force value. So it is not anyhow getting affected by the presence of Q3. Done it. So in this case, if you have to calculate total force acting on Q1, first you will calculate force acting on Q1 because of Q2. It will be in which direction? It will be in this direction. Then force acting on Q1 because of Q3, again that will be in this direction. And you simply need to add these two forces in order to calculate net force acting on Q1.
Similarly, you can calculate net force acting on Q2 or Q3. Anything you can do. Okay? So this is just a direction thing that I have taken. Now let's do one question to understand it more better. So this is one question. Try everybody and let me know what you're getting. Okay? Take your time, do it. Anyone who is finding it difficult to understand as of now, don't worry. Give your time and invest your attention here. Gradually, you will start picking up. So don't worry in case it is feeling harder or something. Okay? Okay, that won't be the answer. सही से करो. Try to add vectorially, ठीक है? Magnitude wise, you cannot add. You are adding force. You cannot add simply magnitude. You have to add it vectorially, right? It's not a scalar. A scalar. Mark it. Yes. You have to calculate force on minus q, right? Yes. Which is kept at the center of hexagon. So this is hexagon. Again, geometry is very simple, right? Dinesh, you got it? Chandrika, Harun, Gauri, Hemant. Okay, I can see Janvi Hazaribagh here. Is this Hazaribagh of Jharkhand? Anyone who got the answer? JNB. You are from which JNB? No, this won't be the answer. क्या कर रहे हो तुम लोग? क्लास को सही से सुन नहीं रहे हो. आई मीन थोड़ा तो सही से ट्राई करो. वेक्टर थिंग अगर पढ़े नहीं हो, पता नहीं है, तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी in the orientation class itself, I requested you all to have a basic knowledge of vector and of differentiation and integration. बोला था ना मैंने? It's important. अब देखो यहाँ पे we have to calculate force on minus q, right? Yeah, Srihari, I will explain this question. Yes, magnitude you have to tell, direction you are not asked, but you will calculate it vectorially, right? कोई भी चीज को calculate करोगे vectorially, you will get two things, direction and magnitude. So magnitude here you have to write, direction you have to ignore. But if magnitude is asked, you won't add things scalarly if it is vector, right? So you cannot do like that. समझ रहे हो? So यहाँ पे देखो what we have to do. Let me explain the question. There are 5 point charges. So on these 5 vertices, there are 5 charges of equal magnitude k. ठीक है? हेक्सागन का साइड क्या है तुम्हारा? हेक्सागन का साइड क्या है तुम्हारा? हेक्सागन का साइड दिया हुआ है L मीटर. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू, इस पे फोर्स कितना लगेगा? दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है? So what will be the force acting on it? Let's say this is charge 1, this is charge 2, this is charge 3, this is 4, this is 5. So force will act on the middle charge because of all the charges present. ठीक है? So force acting on one, let's say this is some fixed charge which is kept at the center. So force, you will calculate force acting on 6 because of 1.
force acting on 6 because of 2, and so on, right? So force acting on 6 because of 1 will be in which direction? Let's check the direction first. So here 1 is of plus q value, 6 is of minus q value. So they are opposite charges. Plus q will attract minus q towards itself. So force will act in this direction. It will attract minus q towards itself. So in this direction. And what will be the value of F61? Its value will be kq into q divided by L ka square. Because this is a hexagon. If its side is L, this also will be L. This also will be L through geometry, right? So this thing will look like this. यस 13th और 14th को चलो इन चीजों को बाद में डील करेंगे ना, पहले तो क्वेश्चन देख लो. सो दिस इज दिस. नाउ व्हाट विल बी दिस थिंग? फोर्स एक्टिंग ऑन 6 बिकॉज ऑफ second charge. So second charge is also plus q, and at the middle charge is minus q. Force will be attracted. So here also force will act like this. Similarly, on third particle will attract sixth particle like this. Fourth particle will also attract sixth particle like this. Yes, somebody is trying to say something. Fifth particle will also attract sixth particle like this. So these are the 5 forces acting. This is force 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. Okay? And all these forces have same magnitude. You can see here, they all share same magnitude. Done it? अब आप देख लो कौन कौन से forces oppositely directed है. So force 1 and force 4 are of equal magnitude and of opposite direction. So they will get cancelled. Similarly, force 2 and force 5 will get cancelled. So this got cancelled. There is only third force remaining. So net force acting on 6 will be equal to how much? It will be equal to kq square by L square. And its direction will be pointed towards this, towards third particle. So net force acting in this case on charge minus q is towards this direction, horizontal direction of magnitude kq square by L square. Okay? So this is going to be the thing. Okay? Everyone clear with this? Yes. Rama, you are correct. Jenvi Haveri, I feel like now you have got the thing. ठीक है? तुमने magnitude wise add कर दिया. You cannot add forces like scalar thing. You cannot, right? Because they are vector thing. So first you need to add it vectorially. Then answer में सिर्फ magnitude को लिखना. ठीक है? Is it clear now? Whoever is vector answer मतलब what is vector? Answer is answer, na? What is scalar or vector answer? I mean, you have to calculate net force. So net force will have certain magnitude. That magnitude I have written over here, right? Answer is this one. Answer is this itself. Okay? Direction will be in the horizontal sense towards third particle. And whoever has their account with not their proper name written, I'm not going to call them in classroom. Okay? So if you want to be heard, you need to change your account thing to your proper name. If it is a school name, it's fine. But if it is HP or something like that, I'm not going to respond. I'm really sorry. Because it really feels awkward how to reply to such people. Jenny Haveri, is it clear? Clear है? How you can say this is wrong? तुम क्यों नहीं समझना चाह रहे हो? तुम समझने की कोशिश करो ना कि what you are saying is wrong. What is problem? I mean, the magnitude of force on the point charge of minus q. There is a particle here. One force is acting in this direction. Another force is acting in this direction. One is acting in this direction. Another is acting in this direction. And there is another one in this direction. What will be the net force? Let's say this is F, this is F, this is F, this is F, this is F. You cannot say total force is 5F. Can you write? No. Total force cannot be 5F. It cannot be, right? Because this is a direction thing. You need to add it with proper direction.
सो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले कैंसिल होंगे, ओनली एफ विल बी रिमेनिंग, राइट? Where answer is 5k q square by L square? Where you're getting it? They must be at center plus q charge must be kept, right? Or you are calculating potential energy or something. I don't know. It is asking force. It cannot be that. You need to recheck. Chalo. So what is this electric field? Now we are going to read this thing and its properties. In the next class, we will read electric flux and then we will deal with Gauss law and its application. Okay? Chalo. So what is electric field? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि if there is a charge and if there is another charge present, suppose कर लो, ऐसा मान लो कि पहले सिर्फ एक चार्ज, ठीक है? There is only one charge present, ठीक है? Yes, Jung, you will get the notes after classroom in the portal, ठीक है? So this is the thing. There is a plus Q1 charge here, done it? Suddenly, if you are bringing another charge in its surrounding, let's say here I'm bringing plus Q2, then this plus Q2 is experiencing some force. Why it is experiencing some force? There must be some influence of Q1 up to Q2, right? So there must be some influence of Q1 in this surrounding, in this vicinity. Done it? So if there is a charge Q1 kept, then in its surrounding, it has certain influence. And because of that influence, it applies certain force on another charge if that is coming into that surrounding, or if it is coming into its own surrounding. जैसे plus Q1 का एक surrounding है, इस सर्कल से मैंने उसकी surrounding को मार्क किया है. Done. So beyond it, up to this is a very big sphere. ठीक है? इसके बाद का distance काफी दूर है, infinity पे है. ठीक है? So that is a very far away point, whatever point is outside this sphere. So at any point which is not at infinity, which is in the atmosphere of plus Q1, in that surrounding, if any charge is entering, that charge will experience force because of Q1. Done it? So there is certain influence of Q1 in its surrounding. और उसी influence को हम लोग show करने के लिए, दिखाने के लिए, we use the term electric field. So we will say that because of charge plus Q1, there is an electric field in that region, and because of that field, plus Q1 is interacting with another charges which is entering into its surrounding. Let's say there is one charge which is coming from infinity and suddenly it enters into this sphere. Then what will happen if it is here and if this distance is Q1, then electric field of Q1 will interact with Q2 and hence we get force acting on Q2. So force acting on Q2 will be K Q1 Q2 by distance का square. Then so electric field को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? Just this is a visual representation of how charges interact with another charge. ठीक है? Sorry, what you are asking? Magnitude increase, area of electric field. Sorry, which area? This is some imaginary area. This is not any specific or any finite area. This is, you can say, infinite area. ठीक है? So, मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने बस तुम लोगों को ये समझाने के लिए ये स्फीयर बनाया कि कोई भी चार्ज जो होता है, जैसे तुम अर्थ को ले लो, अर्थ का क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है. वो फील्ड का वैल्यू कहाँ तक होता है, इन्फ्लुएंस कहाँ तक होता है? अप टू द पॉइंट विच इज नॉट एट इंफिनिटी. Means at a very 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 far distance, influence of earth becomes zero. Similarly, if there is a charge plus Q1 here, its influence will get zero after certain distance, right? So that distance is infinity basically, and whatever area is before that infinity, that I'm marking as this spherical thing. ठीक है? That I will answer gradually. अभी तो मैंने बस start ही किया यार. Give me some time, please. So this is this thing, okay?
इसका मतलब ये है कि प्लस Q1 जो चार्ज है उसके सराउंडिंग में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब वो फील्ड का शेप कैसा दिखेगा, कैसे निकलेगा, दैट वी विल डिस्कस ग्रेजुअली। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, वी हैव टेकन टू चार्जेस, वन इज योर प्लस Q चार्ज, वन इज योर नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वी ड्रॉ like a like a straight line or something. So पॉजिटिव चार्ज से ये सारे ये सारे एक अजम्पशन से कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी फील्ड, आई एम टेलिंग। सो अकॉर्डिंगली वी हैव जस्ट डिफाइंड सर्टेन थिंग्स, जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे, एंड वी विल रीड अराउंड इट। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। सो हम सबसे पहला चीज हम लोग ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। सो इफ दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, from this electric field will go out like this, and this arrow will keep going until it reaches infinity. यानी कि this charge will have an influence up to very 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 far distance. Only when r will become equal to infinity, its influence will drop down to zero. ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए हमने ये कहा है कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे दिखाते हैं, फॉर दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एंटर। ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करता है। ठीक है, हियर इट विल एंड लाइक दिस, एंड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट लाइक दिस, एंड ऑन नेगेटिव चार्ज इट एंड्स लाइक दिस. So this is the way how we draw electric field lines for positive and negative charges. अब इसके बाद देखो यहाँ पे प्लस Q है और माइनस Q है। अभी तक हमने क्या लिया, यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज और एक सराउंडिंग में लिया और दूसरे सराउंडिंग में माइनस Q चार्ज लिया। इन दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ पे इंफिनिटी था। सो दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से दूर थे। सो व्हेन टू चार्जेस आर आउट ऑफ इन्फ्लुएंस, आई मीन सिर्फ एक सराउंडिंग में सिर्फ एक चार्ज है, देन प्लस के लिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो, और अगर उस सराउंडिंग में सिर्फ नेगेटिव चार्ज है देन इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे बना सकते हैं। बट सेकेंड केस में मैंने क्या किया, सेम सराउंडिंग में वी हैव टेकन टू चार्जेस, वन इज प्लस Q, अनदर इज माइनस Q. नाउ हाउ वी विल ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि जो फील्ड लाइन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे क्या करता है, एंड करता है. So when there was only positive charge present, then पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा था और कहां पे जाकर एंड कर रहा था, इंफिनिटी पे. क्योंकि क्यों इंफिनिटी पे एंड कर रहा था, क्योंकि उसके सराउंडिंग में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है जहां पर जाकर वो एंड कर जाए. तो इस केस में व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलेगा एंड सम फील्ड लाइन विल एंटर हियर टू द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी लर्न on negative charge field line enter. So whatever field line is coming from plus Q, some of those field lines can end at negative charge. ठीक है. So इसका field line कुछ ऐसे बना सकते हो, और यहाँ पे straight line नहीं हो रहा है field lines. क्यों straight line नहीं हो रहा है, क्योंकि this plus Q charge is interacting with minus Q charge, and that is why field lines are no longer straight. They are getting curved because of the interaction. अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देते, ठीक है. बट अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ये लाइन को वो अट्रैक्ट कर रहा है, सो इट इज बेंडिंग समवॉट, यू कैन से लाइक दिस. ठीक है. सो इट इज लाइक दिस, यहाँ से एक निकल के यहाँ फिर से एंटर कर सकता है. यू कैन आई मीन मेक मोर लाइन्स एंटर हियर, और नेगेटिव चार्ज पे कुछ ऐसे बना सकते हैं. सो इट विल समथिंग लुक लाइक दिस, प्लस Q और माइनस Q का. जैसे यहाँ पे देखो परफेक्टली बना हुआ. So whatever field line is coming out from positive charge, some of it is ending at negative charge. Not all, because some will find escape from this side to infinity. Similarly, here to negative charge, some field lines feels like they are coming from infinity and ending here. ठीक है, डन है. अब infinity का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने बोला ना, अगर सिंगल चार्ज है तो इससे जो भी फील्ड लाइन निकल रहा है, इट्स स्ट्रेट लाइन appearing to end at infinity. Means at infinity we are assuming there is some negative charge and there it is ending. ठीक है. Because at infinity, very very far away distance, we can have some sort of assumptions. Done. So this is what we can do here. And if there are two same kind of charges kept in vicinity of each other, then what will happen? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. So अगर सिर्फ प्लस Q चार्ज होता तो स्ट्रेट लाइन ऐसे जाता, है ना. देखो, अगर सिंगल प्लस Q चार्ज होता
ये भी सिंगल होता, दोनों एक दूसरे के एटमॉस्फेयर में नहीं होते, तो इट वुड लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखेगा. Now you have brought it together. Then this field line will get repelled by this because plus q charge repels plus q charge. This field line will also get repelled by this. This will also get repelled by this. And because of repulsion, ये इधर की तरफ भागेगा, है ना? और ये तुम्हारा इधर की तरफ भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा. मीन्स दे विल ट्राई टू गो अवे, मोर अवे, राइट. सो इसका फील्ड लाइन हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, प्लस क्यू का. दिमाग में ये रखना है कि प्लस क्यू से फील्ड लाइन हमेशा निकलता है. सो एरो शुड बी लाइक कि फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट, एंड सिंस देयर इज अनदर पॉजिटिव चार्ज इन द सराउंडिंग, फील्ड लाइंस विल गो आउट लाइक दिस. कोई भी फील्ड लाइन इधर आकर एंटर नहीं करेगा क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव चार्ज इन द विसिनिटी, देयर इज पॉजिटिव चार्ज इन द विसिनिटी. ठीक है. सो दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर. किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन? यहाँ तक किसी को डाउट है? नंदिता, प्रज्वल, प्रिया, पांडु, रामा, किसी को भी डाउट है बताओ. नो. साई, हेमंत, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू सो मच. अभी तक हम लोग सिर्फ ड्रॉ करने को सीख रहे हैं, ठीक है, अभी बहुत कुछ सीखना है. सो हमने क्या क्या सीखा? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट फॉर ऑल चार्जेस एंड एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी. और ये कब होगा? when we are drawing electric field lines for isolated charges which are not in vicinity of any other charges. ठीक है. सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर लूप्स और इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. दूसरा प्रॉपर्टी ये होगा कि जब भी तुम फील्ड लाइंस बना रहे हो, जैसे प्लस क्यू चार्ज से हमने बनाया फील्ड लाइंस, सो ऐसे निकल रहा था, ऐसे निकल रहा था. तुमने कभी देखा मैंने दो फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया हो, एक फील्ड लाइन ऐसे बना दिया? नो, इट वोंट इंटरसेक्ट. व्हाई? बिकॉज अगर तुम प्रीवियस केस में जाओ, यहां जाते हैं हम, ठीक है. लेट्स से प्रज्वल, नेगेटिव नेगेटिव के केस में भी सेम तुम्हारा पॉजिटिव पॉजिटिव केस जैसा दिखेगा. ओनली एरो विल बी इन द डाउनवर्ड सेंस. जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ नेगेटिव हुआ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल एंटर लाइक दिस, इट विल एंटर लाइक दिस, and here it will enter like this, and here it will enter like this. So there will be again this space not occupied by any field lines because they are repelling each other. ठीक है. ओनली डिफरेंस विल बी इन द एरो. डन. मैं क्या समझा रही थी? यस. लेट्स कम बैक हियर. अगर तुमसे कोई पूछता है कि इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वी आर गिविंग इट एरो, वी आर गिविंग इट सर्टेन डायरेक्शन. सो व्हाट विल बी फील्ड लाइन डायरेक्शन एट दिस पॉइंट? सो टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी ड्रॉ tangent at curves. जैसे if for simply plus charge you are drawing field lines, then we know it is the direction, we know this is the direction because these field lines are straight. So field lines is along a direction. But if field lines are getting curved, then at different point curving is different, right? Direction is different. So if you have to calculate electric field in such cases, simply draw the tangent. So, and if you're drawing the tangent, electric field will be in the direction of arrow that is in this direction, here in this direction, here in this direction. Done है. So second point हमारा ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता. अब ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, वी हैव टू डायरेक्शंस, एक इधर की तरफ और एक यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे इधर की तरफ. सो if they are intersecting at a single point, we are getting two direction of electric field, which is not possible. At any point, we can have electric field directed in one sense itself, right? It cannot have multiple directions. Done? So they cannot intersect, they cannot loop. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व नहीं बना सकते. क्लोज कर्व नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि देखो, क्लोज कर्व का मतलब क्या दिख रहा है? यहां से निकला, यहां से निकला और यहीं पर आकर एंड हो गया. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेम पॉइंट से फील्ड लाइन निकल रहा है, सेम पॉइंट पे एंड कर रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ इट इज अ प्लस चार्ज, field lines will come out of it. If it is negative charge, field line will end at it. But दोनों काम तो नहीं हो सकता ना. लेकिन अगर फील्ड लाइन को तुमने सर्कुलर बना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चार्ज फील्ड लाइंस आर आल्सो कमिंग आउट एंड आल्सो एंडिंग एट इट.
which is not possible, right? So field line cannot form a closed loop and also they cannot intersect. Done it. थर्ड पॉइंट ये कहता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ठीक है. अब देखो, मैंने यहाँ पे वी हैव सम 1 मिनट. चलो 1 मिनट और मैं लूंगी, उसके बाद आई विल एंड द क्लास, डोंट वरी. ठीक है. सपोज कर लो हमने यहाँ पे प्लस क्यू के लिए बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो हमने बनाया कुछ ऐसे. मैंने कुछ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए, चलो 6 बना दिया, 6 बनाए. अब सपोज कर लो प्लस 2 क्यू के लिए बनाना है. सो डेफिनेटली चार्ज का वैल्यू बढ़ गया है. सो चार्ज का वैल्यू बढ़ जाने का मतलब क्या है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. मीन्स देर विल बी मोर फील्ड लाइंस, देर विल बी मोर फील्ड लाइंस. ठीक है. और इनफैक्ट यहाँ पे इससे डबल फील्ड लाइंस हो जाएंगे. अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पे 12 होंगे. ठीक है. सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. उससे क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है. Done it. In the next class, I will discuss these 3 points again in brief manner, and after that we will do some more questions. ठीक है? Done. Anyone having any doubt? अगर है तो बता दो. And I will upload notes there only. Don't worry. You can get it after 10 minutes. Portal पे ही तुम लोग check करना. How many of you will be able to check it? On the portal you can check. There is a drive. ठीक है? क्या हुआ? हाँ, कल क्लास तो होगा. रिकॉर्डेड क्लासेस, एक सेकेंड मुझे ना थोड़ा टाइम दो. आई विल शेयर हियर इन द चैट सेक्शन. तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, मैं बार बार प्लेलिस्ट बता रही हूँ तुम लोगों को, बट यू पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड इट, सो आई विल शेयर इट सेक्शन. जस्ट गिव मी सम टाइम. ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो. आई विल सेंड दिस टू यू. आई विल डू इट, डोंट वरी.